Hello everyone, welcome to BDS Online classes. Myself Sanjay Verma. Dear students, today in this video I am going to teach you about indicator, that is the part of your fifth chapter, that is acid, base and salt. Okay, so dear students, I hope that all of you listen about indicator. Indicator, that means सूचक. Okay, indicator means सूचक. Students, an indicator is a dye. An indicator is a dye that change color when it put in an acid or a base. Means what? इंडिकेटर में सूचक. सूचक ऐसा डाई होता है, रंजक होता है, जो एसिड या बेस में रखने पर कलर चेंज करता है. ओके, सो ओवरऑल यू कैन से दैट एंड indicator is a dye that change color when put it an acid or base. Okay, students, indicators are following types. Okay, and they give different color. Okay, so see here, number one, litmus paper. Litmus paper. Okay, number two is methyl orange. Methyl orange. Next is phenolphthalein. Phenolphthalein. Fourth is universal indicator. Universal indicator. Okay, fifth is turmeric. Sixth is red cabbage juice. Okay, so you can see that indicators are following types. These are extracted from nature or synthesized from the chemicals. Okay, so number one is litmus paper, number two is methyl orange, number third is phenolphthalein, fourth is universal indicator, fifth is turmeric, that is haldi, sixth is red cabbage juice. Okay, these are types of indicator. Okay, let's be see one by one. Okay, number one is litmus paper. Dear students, litmus paper are consist by or extracted from lichen. What? Lichen.
ओके, तो बेटा लिटमस पेपर को लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अंडरस्टूड? व्हाट इज लाइकेन? लाइकेन इज अ सिम्बियोन, ओके, which is consist by algal and fungal components, as you know that. So litmus paper is consisted by who are extracted from the lichen. It is following two types, okay. Number one is red litmus paper. Red litmus paper. Number two is blue litmus पेपर, ओके। तो ये दो तरह के होते हैं। पहली बात तो लिटमस पेपर को हम लाइकेन से प्राप्त करते हैं, लाइकेन से बना होता है, और ये टू टाइप का होता है, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर, ओके। डियर स्टूडेंट्स, the red litmus paper turn into blue on adding in a base, means जब हम रेड लिटमस पेपर को बेस में डालते हैं इट बिकम ब्लू, ओके। जब हम रेड लिटमस पेपर को बेस में डालते हैं तो कैसा हो जाता है? इट गिव blue color, it change their color into blue, okay. And if blue litmus paper put in an acid, it change into red color, okay. You can see that red litmus paper change into blue color on putting base, while blue litmus paper turn into red on adding in an acid, means जब हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालते हैं तो रेड हो जाता है, लाल हो जाता है, और रेड लिटमस पेपर को बेस में डालते हैं तो ये क्या हो जाता है? ब्लू, ओके। दिस इज अ लिटमस पेपर, understood? Next is methyl orange, okay. Methyl orange, students, methyl orange या synthetic indicator and it gives red color with acid and yellow color with बेस, ओके। तो मिथिल ऑरेंज बेटा एसिड के साथ रेड कलर देता है और बेस के साथ येलो पीला कलर देता है, ओके। तो मिथिल ऑरेंज सोल्यूशन को जब आप एसिड में डालोगे तो ये रेड हो जाएगा, और जब आप बेस में मिक्स करोगे तो कैसा हो जाएगा? येलो पीला हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट इज फिनाल्फथैलीन। तो बेटा समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट इज फिनाल्फथैलीन। फिनाल्फथैलीन
phenolphthalein. Dear students, phenolphthalein gives or become colorless. What? Colorless with what? Acid and pink with base. Means what? आपका फिनाल्फथलीन एसिड के साथ कलरलेस हो जाता है और बेस के साथ गुलाबी कलर देता है. मीन्स ऑन एडिंग फिनाल्फथलीन इन एन एसिड इट टर्न और गिव्स it turn in colorless, while on adding in base it gives pink color. Okay, understood? Next is universal indicator. Universal indicator. Universal indicator. That means सर्वात्रिक सूचक. Okay, dear friends, universal indicator is a group of different indicators that give different color at different pH values. Means what? आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत सारे इंडिकेटरों से मिलकर बना होता है जो अलग अलग pH वैल्यू पर अलग अलग कलर देता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल इट गिव्स डार्क रेड कलर एट 0 pH वैल्यू. इट गिव्स आल्सो रेड कलर एट pH वैल्यू 1. इट गिव्स आल्सो रेड कलर एट pH वैल्यू 2. ओके, सो योर universal indicator is consist by different indicators that gives different color at different pH values. So universal indicator is the best indicator that tells us the acidity and basicity of the substance, that which acid is weaker acid or stronger acid and which is weaker and stronger base. Okay, next is turmeric. Okay, turmeric juice, you know that this is a haldi. It also behaves as a indicator. It gives red color with base. Okay, and red cabbage juice. Red cabbage juice. These two indicators are belongs to natural indicators. Okay, so dear students, this is the indicator. I teach you about indicator, what is indicator, what is their classification and how they change their color in acidic and basic solution. So I hope that all of you understood about indicator from this video. Dear students, I hope that all of you understood. So thank you and God bless you.